Assalamu alaikum students. How are you? Students, now you have reached the stage that you can appreciate what a banker is and what is a customer. शायद आप सोच रहे हो کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا. جب کوئی بینک ہوگا تو وہاں پر ایک بینکر ہوگا, ایک کسٹمر ہوگا, ایک بینک ہوگا, اس کے کسٹمرز ہوں. We already knew it. But from the discussion we had, you will have to know about that from the different angle. I mean from the legal angle. It's not only the one is the banker and other is the customer. What type of legal relationship exists between a banker and customer? Who is a banker and who is a customer in the eyes of law? Where is the point from where the relationship between the banker and its customer starts? These and many aspects, particular relationships. When I say relationships, I mean the legal relationships, the rights and obligations, the duties of the respective parties, rights of the respective parties, those emerge from these legal relationships. So what we ought to know, that what these legal relationships are there, and not only that, by virtue of these relationships, what type of rights and obligations those are vested and created between the respective parties. That is more important, and we need to know the underlying legal requirements, legal provisions which have been provided in statutes so that we can handle our portfolios if we are working in the banks, or if we are a stakeholder, we must have the cognizance of our rights and at the same time must know what our duties are. So students, یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کی, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بینکر یہ ہے, کسٹمر یہ ہے, بینکر کیا کرتا ہے, بینکرز کے فنکشنز کیا ہیں, بینکنگ میں بزنس کون سا ہوتا ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ساری چیزیں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. ان بینکنگ کامنز آرڈیننس 1962 you have studied it. لیکن یہاں پر ایک ڈفرینٹ اینگل ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے جس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں جو ایمرج کرتے ہیں بٹوین دا بینکر اینڈ کسٹمر وین دے آر انگیجڈ ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی, مختلف ٹرانزیکشنز ہوں گی, مختلف انٹریکشنز ہوں گے, ان سے جو لیگل ریلیشن شپ ایمرج کرے گا وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. For instance, when you open an account in a bank, you have a different legal relationship, which of course we will study. When you go to the bank and you deposit your check for collection, a different type of legal relationships is created by that. When you go to the bank and avail a loan, the legal relationship altogether reversed. When you offer some collateral securities to the bank, that is altogether a different relationship. تو یہ ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہے بینکر کسٹمر, تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایز اے لے مین ہو از اے بینکر اینڈ ہو از اے کسٹمر. فرام دا ویو پوائنٹ آف اے پروفیشنل, ایز یو آر گوئنگ ٹو بی ان دا کمنگ ڈیز, یو آٹ ٹو نو, یو نیڈ ٹو نو واٹ لیگل ریلیشن شپس, رادر انڈر لائن لیگل ریلیشن شپ. بعض دفعہ لیگل ریلیشن شپس ایٹ دی فیس آف اٹ You are not making those agreements. آپ کو ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جب ہم ان ٹرانزیکشنز میں, ان انٹریکشنز میں انگیج ہوتے ہیں تو کون کون سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن اس سے کریٹ ہوتی ہیں. وہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے. So students, you have seen different definitions of the word banker as well as of the customer, different interpretation of the banker. So students, یہ جو بینکر کا یہ جو ورڈ ہے,
इसकी different interpretations. Banker, banks, banking, these words are interchangeably used. Banking का भी वही मतलब है जो बैंक का है. And at places, banker means the banking company and the bank. Rather, what functions are being provided by the banks. आपने मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखी. इस तक पहुंचने के लिए हमें डिफरेंट इकोनॉमिस्ट एंड ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस तक जाना पड़ा. And you studied at length the definitions given by J.W. Gilbert, Dr. Hart, Sir John Paget, and I also discussed with you what is the American version about the banker and what is United Kingdom's version about the banker. We also had a reference to the Negotiable Instruments Act 1881 and of course to the Banking Companies Ordinance 1962. तो ये जितने भी डेफिनेशंस आपने देखी, इनसे एक बात जो है सामने आती है वो ये है कि बैंकर कौन है. बैंकर in different definitions, different words have been used. लेकिन अगर इन सब को इकट्ठा किया जाए तो एक ही बात सामने आती है. बैंकर इज व्हाट बैंकर डज. अब इससे हम किधर जा रहे हैं कि बैंकर वो है जो बैंक के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा होता है. वो जो काम कर रहा होता है जो बैंक ने करने होते हैं, जो बैंक्स के डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जो बैंक के फंक्शंस हैं, वो जो कर रहा होता है, वो जो इनको डिस्चार्ज करता है, कैरी आउट करता है, ही इज ए बैंकर. सो इन फैक्ट जैसे कि हमने बात की कि बैंक, बैंकिंग, बैंकर्स, दीज आर इंटरचेंजेबली यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, इन तमाम डेफिनेशंस में जो बातें की गई हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि बैंकर वो है that receives money, that deals in money, that deals in capital, that receives money from the ones who have and lends it to the other who are in need of it. Banker is the one who opens the account, opens the current account, issues checkbooks, and those checks are drawn and accepted by that bank. तो ये बैंकर ये सब काम कर रहा होता है, अकाउंट खोलता भी है, चेक बुक्स इशू भी करता है, और जब चेक्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उसकी पेमेंट करना भी उनका काम. इन्हीं डेफिनेशन में ये बात भी की गई है कि बैंकर का काम कलेक्शन. आपको ये भी देखते हैं आप, बेशक वो यूएस वर्जन है या यूनाइटेड किंगडम वर्जन है, बात एक जगह ही कि बैंकर वो है जो कोई बैंक अकाउंट ओपन करता है एंड डिफरेंट सर्विसेज दोज आर प्रोवाइडेड. चेक्स आर ड्रॉन ऑन द बैंक्स, checks are issued by the customer, those are accepted and paid by the banker, and different ancillary services, those are provided banks. So that takes us to the functions of the banks. हमने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में भी बड़ी डिटेल से पढ़ा कि what are the functions of the bank, what business is transacted by a banking company. तो ये businesses में आपने देखा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, लैंडिंग ऑफ मनी, और उसमें डेफिनेशन में ये बात भी बड़ी खसूसी तौर पे कही गई, एक्सेप्टिंग मनी फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड पेमेंट ऑफ दैट मनी ऑन डिमांड और अदरवाइज. कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, पर्पज ये है कि उनको लैंड करना है, एंड ऑल्सो टू पे दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड ऑन डिमांड और अदरवाइज. अब ये हम बाकी डिटेल्स हैं कि ऑन डिमांड आप कब पे करेंगे, ऑन डिमांड कब आप पे नहीं करेंगे. दैट टेक्स अस टू द टाइप ऑफ अकाउंट्स वी आर मेंटेनिंग. तो ये अदर फंक्शंस में आपने देखा था बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में, रेमिटेंसेस, कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, इशूइंग ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट्स, रेमिटेंसेस,
in the shape of the drafts and other instruments. All these functions, and also one of the most important function, that is the ancillary function, that is the provision of safe deposit lockers. So students, आपने देखा कि banker का क्या scope है? Who is the banker? What is the interpretation of banker? हमने different jurists, different statutes and different economists के version को देखा, तो उससे एक concept banker के बारे में आप तक पहुंचा. स्टूडेंट्स, असल में हमारा इस डिस्कशन का मतलब क्या है? What we are actually studying. हम बैंकर और कस्टमर के दरमियान लीगल रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं. अब हमें पहले पता होना चाहिए हु इज अ बैंकर एंड हु इज अ कस्टमर. तो बैंकर के बारे में आपको वाजे हुआ. अब वो कौन कस्टमर है या कौन सा पॉइंट है जब एक पर्सन ही बिकम्स द कस्टमर ऑफ ए बैंक. तो हमें कस्टमर का पता होना चाहिए कि हु इज ए कस्टमर, जिसके लीगल रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बात करनी. तो कस्टमर के बारे में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. सर जॉन पैजेट कस्टमर के बारे में कहते हैं कि अ पर्सन हु हैज रिकॉग्नाइजेबल रेगुलर रिलेशनशिप रादर द रेगुलर बिजनेस रिलेशनशिप्स विद द बैंक. अब यहां पर जो जोर दिया गया है कि ये रेगुलर हैबिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, एक फ्रीक्वेंसी हो उसमें, तो फिर वो कस्टमर होगा जो किसी बैंक से डील कर रहा है. बैंकिंग बिजनेस के बारे में व्हेन वन हैज द डीलिंग विद द बैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ए कॉन्टिन्यूस वन, द वर्ड हैज बीन यूज्ड, द हैबिट ऑफ डीलिंग इन, रिकॉग्नाइजेबल हैबिट. तो देयर आर वंस हु हैव डिफरेंट वर्जन्स. इसी तरह इसको देखने के लिए मैंने आपको एक जजमेंट का हवाला दिया था. वी हैड रेफर्ड टू द जजमेंट गिवन बाय जस्टिस बेल हैचे. उस जजमेंट में जो बात की गई थी वहां पर यह बात की गई है कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट. When a customer visits the branch and requests for opening of the account and the banker agrees to it and receives the money for that, as soon as this judgment states, as soon as this offer from the customer or of opening an account with that bank that is accepted by the bank, that relationship of the banker and customer is established. तो ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में पहली बात तो आप ये समझ. The point of establishment of relationship is the contract between the banker and the customer by virtue of opening that account. ये अकाउंट ओपन होने से एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है. हम लीगल पोजीशन देखने के लिए जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोज विल बी क्रिएटेड. बैंकर्स की ड्यूटी होंगी. अब आपने अकाउंट खोला है, आप जानते हैं चेकबुक हैज बीन इशूड, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू ऑनर योर चेक्स. इसी तरह आपकी डिफरेंट ड्यूटीज होंगी. इफ देयर आर बैंकिंग आवर्स, यू विल हैव टू प्रेजेंट योर check within banking hours. That should be properly drawn. There must be balance in your account. So there are rights and obligations of the respective party. A contract is established between the banker and the customer from the point of opening an account in the bank. ये starting point है जहां से banker customer relationship establish होता है. अब इसमें दो वर्जन है जैसे मैंने पहले बात की. एक वर्जन ये है कि continuous repeated transactions over a period of time, तो वो होने चाहिए, तो फिर आप कस्टमर कहलाने के हकदार. दूसरा वर्जन जो अभी हमने बात की, इस जजमेंट से भी वही बात हमारे सामने आई कि कस्टमर वो है जो कि बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है और बैंक जब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है. ऑफर क्या है? व्हेन यू गो टू द बैंक यू से आई वांट टू ओपन एन अकाउंट
and the bank says okay and they open your account, اور formalities جو بھی ہیں باقی وہ complete ہو جاتی ہیں. So students, that is the point جہاں پر ایک person he becomes the customer of the bank, and that is the point where banker and customer relationship is established. So what is the basic relationship? Basic relationship is a contractual relationship. A contract between the banker and the customer that is entered into, and the respective rights and duties, those are created by virtue of this contract. So there must be an offer. آپ کو اس بات کا پتا ہوگا کہ کانٹریکٹ میں کیا ضروری چیزیں ہیں. دیر مسٹ بی این آفر اینڈ دیر مسٹ بی دی ایکسیپٹینس آف دیٹ آفر. تو یہ ہم نے کچھ چیزیں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بینکر اینڈ کسٹمر یہ ریلیشن شپ کیا ہے, یہ کب کریٹ ہوتا ہے, یہ آپ کو اس بات کا پتا چلا. دیٹ از ایٹ دی ٹائم آف اوپننگ دی اکاؤنٹ. اب اس کانٹریکچوئل ریلیشن شپ rather the relationships, بہت سارے legal provisions ہیں. Those would affect depending upon the nature of the transaction. تو یہاں پر آپ نے دیکھا بائی اوپننگ این اکاؤنٹ یہ جو ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے. اب یہ نیچر آف لیگل ریلیشن شپ وہ بھی آپ کو پتا چل گئی. دیٹ از کانٹریکچوئل ون. اے کانٹریکٹ ہیز بین established. سو اسٹوڈینٹس اب جو بات دیکھنے کی ہے کہ تمام ریلیشن شپس, ڈفرینٹ ٹائپس آف ریلیشن شپس آپ جب دیکھیں گے تو ان میں بیسک ریلیشن شپ تو بینکر اور کسٹمر کا ہے. دیر ول بی ڈفرینٹ شیڈس. وہ مارٹگیجر یا مارٹگیجی ہے, یا پلیجر اور پلیجی ہے, یا بیلر یا بیلی ہے. یہ تو ڈفرینٹ شیڈس ہیں. انڈر لائنگ جو لیگل اسینشیل ہے, primary essential ہے, that is the contract. There must be the contract between the two parties. One should be the banker and other should be the customer. اب یہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ میں یہ کانٹریکٹ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت. اب یہ نہیں ہے کہ کانٹریکٹ کو آپ علیحدہ کر کے دیکھیں. ڈفرینٹ اسٹڈیز میں, ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس میں کانٹریکٹ would refer to you, rather you would infer different meanings from the word contract. آپ نے یہاں اپنے دیکھنا ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن میں اس کانٹریکٹ کی اہمیت کیا ہے and how these contracts affect you. تو کانٹریکٹ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ A contract starts from a proposal. پہلے جس کو ہم آفر کی بات کر رہے تھے. Every contract starts, there must be a proposal, there must be an offer, and there must be acceptance of that offer. A proposal, that is an offer that is made by one party, جس کو آپ پروپوزر کہیں گے. اب یہاں پہ جو ضروری چیز ہے لیگلی وہ یہ ہے کمیونیکیشن آف دیٹ آفر. That must be communicated to the other party that it has been accepted. اب یہاں پر اس کا کیا ریلیشن؟ آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں. بینک کہتے ہیں نہیں جی آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, آپ کو انٹروڈکشن لے کر آئیں. یو فیل ٹو گیو این انٹروڈکشن, تو ایک آپ کی آفر سے یہ کوئی ایک کانٹریکٹ نہیں ہوگی. کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ کی آفر کو ادر پارٹی جو ہے ایکسپٹ کرے اور وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرے. کمیونیکیشن کیا ہوگی؟ You went to the bank, you showed your inclination to open the account. Bank opened your account. They issued you the checkbook. They allotted you an account number. یہ communication کہ we have accepted your offer and your account has been opened. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آخر why we at all need to know that as a banker or as a customer? ان کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب when there are the disputes. جب آپ کے ڈسپیوٹس کورٹس آف لا میں جاتے ہیں تو پہلا کوشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے, وہ کون سا کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ تھا جس کی بریچ ہو گئی, whether that contract was at all there,
whether that relationship existed between you and your banker. तो खा बैंकर हो या कस्टमर हो, दोनों पार्टीज को प्रूव करना होगा कि ये रिलेशनशिप था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये अंडरलाइन लीगल प्रोविजंस थी, इन लीगल प्रोविजंस की वायलेशन हुई. तो दैट इज टू बी प्रूव्ड, इसलिए इनका जानना बड़ा जरूरी. अब एक्सेप्टेड ऑफर, दैट इज ए प्रॉमिस. तो ये एक प्रॉमिस आपने किस शक्ल में देखा कि दैट योर अकाउंट हैज बीन ओपन. अब आप फॉर एकेडमिक पर्पसेस यू मे नो इट कि ये प्रोमिस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. बैंक में ये सोशल एग्रीमेंट्स नहीं होते जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं. बिजनेस ट्रांजैक्शंस में तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं those are binding and there is the intention that that legal relationships are being created. इसके अलावा कुछ बाद ऐसी ऑफर हो सकती है जिनकी एक्सेप्टेंस भी हो गई, which are not enforceable. जैसे मैंने कहा सोशल एग्रीमेंट्स. अगर आपको किसी ने इनविटेशन दी फॉर द डिनर, दैट इज एन ऑफर, यू एक्सेप्टेड इट. This is an accepted offer. That offer has been accepted by the other party. लेकिन अगर किसी वजह से आपको डिनर ना करवा सके, डिनर पर ना ले जा सके, तो you cannot sue that person. Such agreements, this is a social agreement. There is no intention to create legal relationship. यहां पर intention ही नहीं. तो ऐसे जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं दोज आर नॉट एनफोर्सेबल. एनीवे, हमारी जो डिस्कशन में यहां पर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर विच इज अ सोशल वन. दीज आर ऑल एनफोर्सेबल. बाज सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सो यू मस्ट नो देयर मे बी द सोशल एग्रीमेंट्स एज वेल. अब बात है कि यहां पर एक फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए. अकाउंट खोलते हुए जब आप खोलने जा रहे हैं तो आपकी उसमें कॉन्सेंट होनी चाहिए. ये ना हो कि किसी बैंक को टारगेट मिला है कि आपने 100 अकाउंट्स खोलने हैं और वो बाई नॉट द फ्री कॉन्सेंट. हम देखते हैं फ्री कॉन्सेंट है क्या आपकी कॉन्सेंट नहीं है या आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं है और आपका अकाउंट वो खोल लेते. नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वुड टेक प्लेस. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि आपकी कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए. हाउ द फ्री कॉन्सेंट टेक्स प्लेस. फ्री कॉन्सेंट स्टूडेंट्स उस कॉन्सेंट को कहते हैं व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. अगर किसी को मजबूर किया गया है फिजिकली और अदरवाइज, अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसी अकाउंट ओपनिंग में, तो क्या आपके ऊपर कोई फिजिकल थ्रेट होगा, बट दैट कैन बी कोercion में वो चीज भी आती. सो स्टूडेंट्स, देयर शुड नॉट बी एनी कोercion फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कोercion नहीं होनी चाहिए. तो बात हमारी जो हो रही है, हम उसी सीक्वेंस में चलें कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है. लीगल रिलेशनशिप क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है. दिस इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ. इसका मतलब ये है कि ये एग्रीमेंट ऐसा है जिसको कोर्ट्स ऑफ लॉ में एनफोर्स किया जा सकता है. ये इख्तियार है रेस्पेक्टिव पार्टीज के पास. तो हमने साइकिल देखी, proposal, there is an offer, accepted offer, that becomes the promise. The promise में अगर consideration हो, that is an agreement. और यहाँ पर बात हो रही है agreement enforceable at law, तो ये एक contract होता है. अब हम contract के essentials देख रहे हैं कि contract बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी. What are the ingredients which make a contract enforceable at law?
وہ کون سے ایگریمنٹس ہیں which are contracts and which are enforceable at law. تو پرومس کی ہم نے بات کی, انٹینشن کی بات کی کہ لیگل ریلیشن شپ تو کریٹ ہو رہا ہے, لیگل ریلیشن شپ کے لیے انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ از مسٹ. جیسا کہ ہم نے بات کی اسٹوڈینٹس کہ سوشل ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, وہاں پر ایک آفر بھی ہو سکتی ہے, ایکسیپٹینس بھی ہوگی, ایکسیپٹڈ آفر بھی ہے, there is a promise but that doesn't create any legal relationship, جیسے کہ آپ نے ابھی ڈنر کی ایگزامپل میں دیکھا. لیکن there is a presumption with regard to the commercial transactions. Whenever there are commercial transactions, even it is not expressly written or said, it is implied that this agreement, this relationship, that would create legal obligations on the respective parties. Not only obligations as well as rights. Rights and obligation would be the right words. تو یہ rights and obligations کی intention that is always there, that is implied with respect to the commercial transaction. Social agreements جیسے ہم نے بات کی, these are not enforceable at law. اب ویلڈ کانٹریکٹ کون سا کانٹریکٹ ہو, اس میں فری کانسینٹ ہونی چاہیے. فری کانسینٹ آپ نے دیکھا کہ مختلف کانسینٹس ہو سکتی ہے, بٹ دیٹ کانسینٹ شیل ناٹ بی کالڈ فری کانسینٹ. وہ کون سی صورتیں ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں, کوارشن, انڈیو انفلوئنس, فراڈ, مس ریپرزینٹیشن اور مسٹیک. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی موجود, اینی ون آف دیز, کوئی کوارشن ہے, کوئی فزیکل تھریٹ ہے, کوئی مورل تھریٹ ہے, کوئی انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کیا گیا ہے, آپ کے پاس کوئی انفلوئنس ہے, امپلائر ہے اپنے امپلائی پر ایکسرسائز کر رہا ہے انڈیو انفلوئنس. اٹ از ناٹ اونلی دا انفلوئنس, یو مے ہیو دا انفلوئنس, بٹ ایز لانگ ایز دیٹ انفلوئنس has not been used in an undue manner, that is not undue influence. To have an influence doesn't mean you have undue influence. It must be exercised. That influence, if unduly exercised, that would be undue influence. Existence of influence, that doesn't make any difference. تو یہ پروو کرنا پڑے گا. کوئی فراڈ کے ذریعے سے کانٹریکٹ ہوتا ہے, مس ریپرزینٹیشن ہے, مسٹیک. اب یہ چیزیں ہمارے لیے کیوں ضروری کہ مس ریپرزینٹیشن بائی دی بینکر آر دی کسٹمر, اف دیٹ از دیر, دیر ول ناٹ بی اے ویلڈ کانٹریکٹ بٹوین دیم. تو جب ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنے رائٹس کو ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ گو ٹو دی کورٹس آف لا فار ایجیٹیٹنگ یور رائٹس, رادر فار دا ریڈریسل آف یور گریوینسز. تو اس کے لیے یہ اسینشیلز ہونا ضروری ہے, یہ انگریڈینٹس ہونا ضروری ہیں. تو اس میں پہلی بات تھی فری کانسینٹ. کانسینٹ شوڈ بی فری. اف اٹ از ناٹ فری, دیٹ ول ناٹ گیو رائز ٹو اے ویلڈ کانٹریکٹ. اب اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی آف پارٹیز, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہر کانٹریکٹ میں, ہر ایگریمنٹ میں امپورٹنٹ ہے, بینکر کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ. یہ کیپیسٹی دیٹ کسٹمر شوڈ بی آف دی ایج آف میجورٹی, آف ساؤنڈ مائنڈ, not debarred under any law, and there must be an offer and acceptance of that offer. اگر کوئی مائنر ہے, اس کا اکاؤنٹ کسی بینکر نے کھول لیا ہے, تو بینکر, that doesn't create any valid contract and the banker would be in trouble. تو وہ اپنے رائٹس کو ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے. اگر بینکر کو اب کوئی گریوینسز ہیں تو ان کی ریڈریسل حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی سے یہاں مراد ہے لیگل کیپیسٹی آف دی پارٹی. یہاں کوئی فائنینشیل کیپیسٹی کی بات نہیں ہو رہی. دیٹ از آف دا لیگل کیپیسٹی آف دی ایج آف میجورٹی. میجورٹی کی ایج دیٹ از 18 years اور مور, دیٹ از اے میجر. اس سے کم دیٹ ول بی دا مائنر. If there is an age of majority that has been attained by a person, if he is a major, the banker can open the account. اگر مائنر ہے تو بینکر اس کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا. کوئی پریکٹیکل سچویشنز ہیں
کہ پریکٹس ہے مائنرز کے اکاؤنٹ کیسے کھولے جاتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیگل پوزیشن یہ. اس کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ پارٹیز, یہ صرف کوئی کسٹمر کے لیے نہیں ہے, کوئی بینکر کے لیے ایج آف میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے, دیٹ از این انکارپوریٹڈ اینٹی, تو اس لیے وہ بات نہیں کی. اگر کوئی ایگریمنٹ ہوگا تو دونوں پارٹیز کے لیے ضروری ہے کہ ایج آف میجورٹی ان کی آف ساؤنڈ مائنڈ. اب بینکر کے لیے یہ ضروری ہے, وین دے آر opening the account, the person who is opening the account, he must be of sound mind. اب یہ sound mind کہ بینکر کے پاس کوئی آتا ہے, he is of sound mind, and there is no reason to believe that a person is not of sound mind. That account has been opened. اب لا یہاں پر یہ کہتا ہے کہ at that very time he was sound, that is a valid agreement. لیکن اس کے بعد due to some disease or other factors, he is no more of sound mind. So that account should be closed. Operations in that account should be suspended. تو یہ sound mind کا ہونا ضروری. Not debarred under any law. کسی law کے تحت debarred نہیں, disqualified نہیں. کوئی law کہتا ہے کہ account نہیں کھل سکتا. For instance, he is an insolvent person. An insolvent person cannot enter into account. So, you cannot open the account of such a person. اور آخری بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. There must be an offer and acceptance of that offer. تو یہ بات ضرور ہونی چاہیے تمام صورتوں میں. کیپیسٹی میں آپ نے دیکھا کہ there must be the legal capacity. Legal capacity کیا ہے؟ That we have discussed. پھر lawful consideration ہونی چاہیے. عام ایگریمنٹس میں یہ lawful consideration جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ. یہاں پر بھی بینک میں تو کوئی unlawful consideration بہت مشکل سے ہوگی کہ there will be unlawful consideration, but if at all it is there, it will not culminate into a valid contract. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ میں ہے وہاں پہ جو consideration ہے وہ lawful ہونی چاہیے. اس سے مراد کیا ہے؟ For instance, you are entering into a contract. آپ کسی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ کانٹریکٹ ہے, I will help you in doing that work. تو اس کے لیے جو ہے اتنا پیسہ جو ہے illegal money that will be attained. Through that act that will be derived. وہ ایکٹیویٹی کو illegal ایکٹیویٹی ہے, اس کے لیے کام ہو رہا ہے تو اور اس کو ہم we shall share it. سے چلیں آپ ایک crude example لے لیں کہ آپ تو نہیں کہنا چاہیے you are very educated persons and you will not engage in these activities. کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں دو شخص کہ ہم نے یہ فراڈ کرنا ہے, یہ ڈیکوائٹی کرنی ہے, تو اس میں سے جو رقم ہوگی اس کو ہم 50-50 جو ہے ڈیوائڈ کر لیں. that agreement ہے, that is a written agreement that has been signed. اب یہاں پر ایگریمنٹ جو ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو کنسیڈریشن دیٹ از ناٹ lawful, دوسرے آبجیکٹ بھی lawful نہیں. ایک اسینشیل یہ بھی ہے کہ آبجیکٹ بھی lawful ہونا چاہیے. neither the object is lawful nor the consideration is lawful. تو اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوگا تو that will not be a valid agreement. And if it is not a valid agreement, that will not be enforceable at law. تو یہ lawful consideration کا ہونا ضروری. اس پر میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ at most of the times in banks the consideration is lawful. Anyway, if at any point in time it is proved that it is not lawful, the law will come into play and that contract will not be a valid contract. So students, اب یہ تمام ریلیشن شپس جیسے کہ ہم نے بات کی یہ کانٹریکچوئل ریلیشن شپ, اور ان کانٹریکچوئل ریلیشن شپس میں ایک کانٹریکٹ, کون سا کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا, اس کے اسینشیلز کیا ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک اسینشیل یہ بھی ہے,
not expressly declared void. बाद एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली लॉ ने कह दिया कि ये एग्रीमेंट है, ये void agreement. These are not agreements in the eyes of law. Ab initio void. ये नहीं कहा, ये जनरल बात नहीं है कि ये चीजें अगर होंगी तो कोई एग्रीमेंट void हो जाएगा. ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ये है कि कहा गया ये एग्रीमेंट आप करेंगे इसके बारे में तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड होगा. कुछ उसकी एग्जांपल्स आप देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा. अब ये कोई बैंकिंग इससे ताल्लुक नहीं है. बैंक में भी अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड किया गया है और उस पर आप करते हैं. फॉर इंस्टेंस कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का है, तो पहले हम ये एग्जांपल ले लेते. और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट डिक्लेयर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंपनी कि इस मकसद के लिए कंपनी काम करेगी, इसके लिए फाइनेंस ले सकती है. दैट कंपनी दैट कम्स टू यू फॉर सम फाइनेंसिंग फैसिलिटी, फॉर सम क्रेडिट, और वो जो पर्पस बता रहे हैं उस फाइनेंस का, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द पर्पस मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट वेरी कंपनी. तो आप ऐसे काम के लिए फाइनेंस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गिव फाइनेंस टू सच ए कंपनी बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंपनी. तो ये लॉ ने एक्सप्रेसली बताया गया कि ऐसा जो है एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एग्रीमेंट्स को बताया गया कि ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये अगर किए जाएंगे तो वॉइड हो जाएंगे. एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. आप कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के कि ये रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को कहते हैं कि जी अगर आप ये मैरिज में के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होते तो उसके बदले में आपको इतना पैसा दिया जाएगा. ये एक एग्रीमेंट हो सकता है. आई विल पे यू दिस अमाउंट, देयर इज एन एग्रीमेंट प्रोवाइडेड यू डोंट मैरी टू दैट पर्सन. ये एग्रीमेंट हो गया, दैट हैज बीन साइंड बाय बोथ द पार्टीज. लेकिन लॉ ये कहता है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कि नो पर्सन और पर्सन्स कैन मेक सच एन एग्रीमेंट इफ एट ऑल मेड. अगर आपने कर भी लिया है तो दैट इज नॉट एन एग्रीमेंट इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ उसको एग्रीमेंट तस्वुर ही नहीं करता. दैट इज ए वॉइड एग्रीमेंट. तो कोई ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं करेंगे जो कि वॉइड एग्रीमेंट. इसी तरह एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. आप कहें जी ये आप काम बंद कर दें, ये आप बिजनेस नहीं करेंगे, तो इसके लिए एग्रीमेंट हम आपसे करते हैं, वी शैल पे यू दिस अमाउंट. रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के सिलसिले में कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा. देयर आर सम लीगल प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन. कोई क्रिमिनल एक्ट है, किसी ने चोरी की है, उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. वो पार्टी आपके पास आती है कि जी आप ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दें, इसके बदले में इतना आपको पैसा मिलेगा. ये एग्रीमेंट होगी. ये एग्रीमेंट ये हो रहा है. एंड इवन इफ दैट इज साइंड, दैट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट. दैट इज नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ एट ऑल. दैट इज ए वॉइड एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो. At the time when it is made, it is void at that very time. ये enforceable नहीं है. लॉ ने एक्सप्रेसली कह दिया है कि ऐसे एग्रीमेंट्स एंड अदर वेजरिंग एग्रीमेंट्स और बाकी एग्रीमेंट्स एंड डिटेल दैट इज अ लॉन्ग लिस्ट. तो ये एग्रीमेंट्स ये enforceable नहीं है, बल्कि these are void at the very beginning when those are made. तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए between the banker and the customer which has been declared void. तो वो एग्रीमेंट होगा नहीं. ये एक एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कि ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इन कामों के लिए नहीं कर सकते जिनको एक्सप्रेसली void डिक्लेयर कर दिया गया. तो नो सच एग्रीमेंट कैन बी मेड. लीगल फॉर्मेलिटीज. अब बहुत सारे
एग्रीमेंट्स होंगे उनमें कुछ आपको लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, दोज आर टू बी कंप्लीटेड, दोज आर टू बी फर्निश्ड, दोज आर टू बी मेड. फॉर इंस्टेंस, अगर किसी एग्रीमेंट के बारे में कहा गया है कि इट शुड बी इन राइटिंग, दैट मस्ट बी इन राइटिंग. अब आप देखेंगे डिफरेंट एग्रीमेंट्स, बैंकर्स लोन देते, लोन डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स तो इन राइटिंग में हो. रिटन डॉक्यूमेंट, दैट मस्ट बी इन राइटिंग. कोई मॉर्टगेज क्रिएट कर रहे हैं, दैट मस्ट बी इन राइटिंग. तो अगर राइटिंग ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉमिस या एग्रीमेंट ये वर्बल भी हो सकता है, लॉ ये इसमें रुकावट नहीं डालता, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन में वर्बल एग्रीमेंट्स नहीं किए जाते. तो ये आपको प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को सामने रखना है. तो यहाँ पे एज ए बैंकर यू विल नॉट एंटर इनटू वर्बल एग्रीमेंट्स. तो इन राइटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, तो वो होना चाहिए. क्योंकि एग्रीमेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया कि आपने एक अकाउंट ओपन किया, वो तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है ऑफ द बैंकर एंड कस्टमर. उसके बाद आप डिफरेंट सर्विसेज अवेल करते हैं, उनके साथ उनके मुतालिक डिफरेंट एग्रीमेंट्स होंगे. आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो दे विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद यू, दैट विल बी डिफरेंट एग्रीमेंट. आप कोई लोन फैसिलिटी लेने जाते हैं, उसके लिए डिफरेंट एग्रीमेंट होगा. आप कोई नॉन फंडेड फैसिलिटी लेना चाहते हैं, आप लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाना चाहते हैं, देयर विल बी ए डिफरेंट एग्रीमेंट. तो ये कोई एग्रीमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हो गया, ये तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है ऑफ ए बैंकर एंड कस्टमर. नाउ दिस रिलेशनशिप हैज़ टू प्रोसीड फर्दर. तो उसमें आपके एज पर ट्रांजैक्शन डिफरेंट एग्रीमेंट्स विल बी एंटर्ड इनटू बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर. तो प्राइमरी जो रिलेशनशिप, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. द लीगल रिलेशनशिप की जो बात कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी. ये उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि राइटिंग अगर वो ज़रूरी है तो दैट मस्ट बी इन राइटिंग. और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में एग्रीमेंट्स विल ऑलवेज बी इन राइटिंग. विटनेसेस, देयर मस्ट ऑल्सो बी द विटनेसेस. अगर कोई साइन हो रहे हैं तो उसको विटनेस करना है. अगर दो पार्टीज हैं, दोनों की तरफ से एक एक विटनेस होना ज़रूरी. इफ दैट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, ओथ कमिश्नर की अटेस्टेशन है या किसी और, दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्यूमेंट, दैट मस्ट बी अटेस्टेड. रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत, तो वो रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी होगी, उसके ऊपर कुछ स्टैम्प्स की ज़रूरत है, कोई कोर्ट फीस की ज़रूरत है, दैट विल हैव टू बी अफिक्स्ड. अब रजिस्ट्रेशन, जैसे आप मॉर्टगेज के लिए जाते हैं, अब ये रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. ये उस अथॉरिटी के पास, द रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास इसका रजिस्टर होना वो बहुत ज़रूरी है, तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल्स which are required to be fulfilled in case of a valid contract. इसके साथ साथ ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इन सब का इस फोर्स से इस्तेमाल होना ज़रूरी नहीं है, but still these remain the essentials of a valid contract. सर्टेन होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं हो कि जिसके बारे में आपको पता ना हो, उसके बारे में आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं. That must be set. And possibility of performance, ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि दैट कैन बी परफॉर्म. ये कोई बात नहीं है कि आप कहें कि ये काम हो जाएगा, हाँ जी जादू की छड़ी से आपको ये फाइनेंस मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं. दैट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्मेंस अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बाय बोथ द पार्टीज, एंड दैट परफॉर्मेंस विल हैव डिफरेंट मीनिंग. परफॉर्मेंस बाय द कस्टमर, परफॉर्मेंस बाय द बैंकर, तो वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में. बाकी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाएगा उसके मुताबिक. एनीवे दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें होना ज़रूरी. अब कॉन्ट्रैक्ट से एक तो आपने देख लिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसमें कौन से एसेंशियल्स हैं, ये सब होंगे तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहें. अब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. जैसे मैंने कहा, ये ऐसा काम बैंक्स में होता नहीं, बैंक्स को इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर किसी वजह से भी कोई डेवलपमेंट वर्क के लिए
کوئی بینکر جو ہے انڈیو انفلوئنس آپ پر استعمال کرتا ہے اور اکاؤنٹ آپ سے کھلوا لیتے ہیں. دیٹ از avoidable contract. Because your free will, your free consent, that is not there in that very contract. یہاں پر فری کانسینٹ کا ہونا ضروری ہے, اور انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے یا کوئرشن کی وجہ سے یا فراڈولینٹلی یا مس ریپرزینٹیشن کی وجہ سے مس ریپرزینٹ کیا گیا آپ کو اور وہ آپ سے اکاؤنٹ کھلوا لیتے. یو آر ناٹ ان نیڈ آف دیٹ. اب یہاں پر جو ہے وہ کانٹریکچوئل ریلیشن شپ وہ آپ نے کھولا ہے, سائن کیے ہیں, دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ. اگر آپ کہیں کہ اکاؤنٹ کھل گیا ہے جی, کانٹریکٹ تو ہو گیا. اب یہ کس قسم کا کانٹریکٹ؟ ایک پارٹی کی جو کانسینٹ ہے دیٹ از ناٹ فری. اس صورت میں یہ اس کو ہم وائڈیبل کانٹریکٹ کہتے ہیں. وائڈیبل کانٹریکٹ کیسے کانٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کی فری ویل نہ ہو, فری کانسینٹ نہ ہو, تو اٹ از اوائڈیبل ایٹ دی آپشن آف دیٹ پارٹ. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریسنڈ کر سکتے ہیں. دیٹ از یور آپشن. کس کی آپشن ہے؟ دیٹ از دی آپشن آف دی پارٹی whose consent is not free. تو یہ ایسے کانٹریکٹ ہیں which are voidable, rather avoidable at the option of the one or the more parties, but not at the option of the other part. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے یہ انڈیو انفلوئنس استعمال کیا ہے آپ پہ, یہ اس کی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو کینسل کر سکے یا اس کو اوائڈ کر سکے. یہ آپ کی آپشن ہے. اگر آپ اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے, یہ وائڈیبل کے بارے میں بتا دیں. جس کی آپشن ہے the party which can avoid it, which can cancel it, if it doesn't avoid it and it doesn't deem necessary to avoid it, اور اس کو چاہتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن جاری رہے, یہ انفورسیبل ہو, تو that would not be voidable, that would culminate, rather transfer to a valid contract. But that is the option available. اگر party concerned doesn't want to avail, that is up to that part. So students, valid contracts آپ نے دیکھے, contracts وہی ہیں جو valid contracts ہوتے ہیں. لیکن بعض صورتوں میں کانٹریکٹ ہو گیا ہے لیکن وہ voidable contract ہے. وہ کون سے circumstances ہیں جس میں ایک کانٹریکٹ voidable ہوگا, یہ ہم نے بات کی. وائڈ کانٹریکٹ کی بات بھی ہم نے کیا, ایکسپریسلی وائڈ ہو سکتے ہیں یا ادروائز وائڈ ہو سکتے ہیں. وائڈ کانٹریکٹ میں آپ نے ایکسپریسلی وائڈ کی بات آپ نے دیکھی, ریسٹرینٹ آف میرج, ریسٹرینٹ آف ٹریڈ, ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگ. اگر ایسے کوئی کانٹریکٹ ہوں گے تو سچ کانٹریکٹس دوز آر وائڈ کانٹریکٹ. لیکن ایک کانٹریکٹ دیٹ میں بی ویلڈ کانٹریکٹ بٹ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم دیٹ میں بیکم وائڈ for one reason or the other. Due to insolvency of the party. Party was not insolvent when that account was open. بعد میں وہ insolvent ہو جاتی تو وہ agreement that will be unenforceable at that time. اب یہ unenforceable کی جو ہم نے بات کی, یہ unenforceable کیسے ہو سکتے ہیں؟ There is a void contracts, those are not recognized کانٹریکٹ ان دی آئیز آف لا. وہ انیشلی وائڈ ہو سکتے ہیں. ایب انیشیو کی جو بات کی وہ لیٹر آن کسی وجہ سے وائڈ ہو سکتے ہیں. اب یہ ان انفورسیبل کانٹریکٹس دوز آر امپورٹنٹ ٹو بی سین. ابھی ہم نے مختلف سچویشن دیکھی تھی کہ وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں دوز مسٹ بی فلفلڈ. اس میں ہم نے رائٹنگ کی بات کی کہ اف اٹ از needed, if it is required by law that agreement should be in writing, that must be in writing. ہم نے witnesses کی بات کی, ہم نے attestation کی بات کی, registration کی بات کی, stamps کی بات کی, revenue stamps لگانے ہیں نہیں لگے ہوئے. اب یہ جو ہے deficiency, یہ نہیں کہ revenue stamp لگنے چاہیے تھے کسی ڈاکیومنٹ, وہ revenue stamp نہیں لگے تو وہ agreement جو ہے وہ voidable ہو گیا یا وہ void ہو گیا. No, that is an enforceable agreement, that is a valid agreement
یہ جو ڈیفیشنسی ہیں, جو ٹیکنیکل ڈیفیشنسیز ہیں, in the absence of these deficiencies it is not enforceable. If these rectifications, those are made good, or the needed deficiency that is removed, then those will become enforceable. تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس پر unenforceable ہو سکتے ہیں. So those will be enforceable when those discrepancies are removed. So students, آپ نے دیکھا کہ بینکر کسٹمر, یو سا ان ڈیٹیل بینکر کون ہوگا, کسٹمر کون ہوگا, ان میں لیگل ریلیشن شپ کب اسٹیبلش ہوتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ وین دی اکاؤنٹ از اوپنڈ بائی دی کسٹمر ان دی بینک. یہ پوائنٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آف دا لیگل ریلیشن شپ. اور یہ کون سا لیگل ریلیشن شپ ہے وچ از اسٹیبلش, دیٹ از دی کانٹریکچوئل ریلیشن شپ, دیٹ از دی کانٹریکٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز. اب یہ جو کانٹریکٹ ہے, اب یہ کانٹریکٹ کیا ہے, یہ کانٹریکٹ کے کیا پروسیسز ہیں, آفر کیا ہے, ایکسیپٹڈ آفر کیا ہے, پرومس کسے کہتے ہیں, ایگریمنٹ کیا ہے, کانٹریکٹ کیا ہے, اور ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے اسینشلز کیا ہیں. وی ہیو اسٹڈیڈ آل دیز پوائنٹس ان ڈیٹیل کہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ کیسا کانٹریکٹ ہوگا, اور اس ویلڈ کانٹریکٹ کے ذریعے ریلیشن شپ بٹوین دا بینکر اینڈ کسٹمر دیٹ از اسٹیبلشڈ. اینڈ وی آر انٹرسٹڈ ان دیٹ ریلیشن شپ. اور بینکر کسٹمر کے باقی جو ریلیشن شپس ہم اسٹڈی کریں گے, ایٹ دا روٹ آف دیٹ ول بی دی کانٹریکٹ, دیٹ ول بی دا ریلیشن شپ آف دی بینکر اینڈ کسٹمر. اینڈ بائی ورچو آف دیٹ ریلیشن شپ ادر ریلیشن شپ ڈو انسو فرام دیٹ. وہ اس کی آف شوٹس ہیں, وہ اس سے نکلتے ہیں. تو یہ تمام ریلیشن شپ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو یہ بیسک ریلیشن شپ جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا ہے بائی دی اوپننگ این اکاؤنٹ ان اے بینک بٹوین دا بینکر اینڈ دا کسٹمر, دیٹ شوڈ ریمین ان مائنڈ آل دا ٹائم وین وی آر اسٹارٹنگ ڈفرنٹ ریلیشن شپ. اور یہ ریلیشن شپ کا ورڈ جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں, اٹ مینس انڈر لائن لیگل ریلیشن شپس. کون سے لیگل ریلیشن شپس ہیں جو کہ گورن کر رہے ہیں, واٹ آر دا رائٹس اینڈ آبلیگیشن which govern the respective parties. So students, اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. Thank you for being with me. اللہ حافظ.